एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम बात करने वाले हैं एस्टिमेटिंग अनसर्टेनिटी ऑफ द इफेक्ट्स ऑन दिस डिकोटमस आउटकम। जो है एस्टिमेट अनसर्टेनिटी ऑफ इफेक्ट को एस्टिमेट करना है। इसमें हमने एज विद द ट्रायल्स डैट मियर कंटिन्यूस आउटकम्स, वो ट्रायल्स जिनमें कंटिन्यूस आउटकम्स आ रही हैं, ट्रायल्स विद डिकोटमस आउटकम डू नॉट रिपोर्ट द कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट द एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन नंबर नीडेड टू ट्रीट आर रिलेटिव रिस्क रिडक्शन। अब इसमें जो है काफ़ी सारे नंबर्स चाहिए होते हैं जो कि एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन कर सके और नंबर नीडेड टू ट्रीट भी हो सके कम और रिलेटिव रिस्क रिडक्शन भी हो सके। ऑलमोस्ट ऑल हाउएवर सप्लाई सफिशिएंट डाटा टू कैलकुलेट द कॉन्फिडेंस लेवल। A very rough 95% confidence interval for the absolute risk reduction can be obtained simply from the average sample size of the experimental and control groups। और यहाँ पर जो है एक्सप्लेन भी किया हुआ है इसका फॉर्मूला पुट करके +-1 और इस तरह से। और इसके बाद हमारे पास जो आ रहा है वो है Hurtbut, the approximation work well enough, it gives an answer that is close enough to that provided by more complex equations when the average risk of the event of the interest is in treated and control group is greater than 10% and less than 90%. To illustrate the calculation of the confidence interval for the dichotomous data, to recall that in the study of by Oslian et al. 1997, the risk of control participant was 27, the risk to experimental participant was 6%, and the average size of each group was 182। नीचे ये बताया भी हुआ है डिटेल से फॉर्मूला में पुट करके। देन हमारे पास आता है दस द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन इज 21% एंड इट्स 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल एक्सटेंड फ्रॉम 14% टू 28%। दिस रिजल्ट हैज़ बीन इलस्ट्रेटेड ऑन अ ट्री प्लॉट ऑफ द एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन। उसमें जो हमारे पास अब जो लॉजिक आता है, the logic of this tree plot is exactly the same as what used for tree plot of a continuous variable which was presented earlier. Again, we plot the smallest worthwhile effect which we nominated as an absolute risk reduction of the 5% corresponding to a number needed to treat of 20. The effect of the intervention absolute risk reduction of 21% and its confidence interval 14 to 28% on the graph. In this example of the estimated absolute risk reduction and the confidence interval are clearly greater than the smallest worthwhile effect. So we can confidently conclude that this intervention is clinically worthwhile. In the example just need be calculated about the risk reduction and 95% confidence interval for the absolute risk reduction. We could, if we wished, have calculated number needed to treat and the 95% of the confidence interval for the number needed to treat. As we have already seen, it is a simple matter to calculate the number needed to treat NNT from the absolute risk reduction, and we just invert the absolute risk reduction to obtain the number needed. उसके बाद यहाँ पर जो है स्मॉलेस्ट वर्थवाइल इफेक्ट बताया हुआ 5% ARR। उसके बाद वेरी हार्मफुल इंटरवेंशन एंड देन हमारे पास इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट आ रहा है विच इज़ 0। दूसरी तरफ जाएँ तो वेरी इफेक्टिव इंटरवेंशन में जो है हमारे पास फिर 14%, 21% और 28%, मतलब मिनिमम अगर होगा 14 होगा, देन मॉडरेट 21 एंड मैक्सिमम 28%। ट्री प्लॉट ऑफ साइज ऑफ द ट्रीटमेंट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑस्लिन 1997। द ट्री प्लॉट कंसिस्ट of horizontal line presenting the treatment effect और इसके साथ extreme of the horizontal are very harmful and very effective treatment. The smallest worthwhile effect is presented as a vertical dotted line, ये वाला, ठीक है। इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। कॉम्प्लिकेशंस फॉलोइंग द अपर एब्डोमिनल सर्जरी, स्मॉलेस्ट वर्थवाइल इफेक्ट हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज एन एब्सोल्यूट रिडक्शन इन द रिस्क ऑफ द 5%। द बेस्ट एस्टिमेशन ऑफ द
size of the treatment effect 21% and all of the 95% confidence interval about this estimate fall to the region of the line of the smallest worthwhile effect. Thus the treatment effect is clearly greater than the smallest worthwhile effect. So यहाँ तक हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया और हमारा जो है टॉपिक भी कवर हो गया। यहाँ तक कोई भी इशू हो तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।